Now I have drawn one diagram on the board. Those are present here for this lecture. Please draw this diagram in your notebook and try to solve this problem. More than 43 students are present for this session now. Please, those are in this meeting, please draw this diagram and try to solve the problem. Find out the moment of, centroid of this object from the location A. I will locate the point A. I am going to locate the point A here. Find out the centroid. Find out the centroid. Somnath Shinde. Somnath. हाँ यस सर. हाँ आवाज येतोय का? हाँ येतोय सर. येतोय ना. ओके ओके. डायग्राम ओके दिसते सर. व्यवस्थित? डायग्राम हाँ दिसते सर. ओके ओके. One thing you do, draw this diagram in your notebook and try to solve this problem. I will give a 5 minutes to you. After that, I will draw this diagram. I will solve this problem. Okay. Hello, sir. नाही झाले व्यवस्थित. हाँ सोमनाथ, unmute, mute yourself. Sorry, mute yourself. Now try to solve this problem. The dimensions already I have given here. The upper flange. Okay, one thing I have not given. This upper flange dimension I have not given. 100 mm. So it is 100 mm will take. Dimensions. Now all the dimensions are visible to you. Now try to solve this problem. Our first step to solve the problem already I have mentioned. It is check symmetric or non-symmetric. Check symmetric, and by seeing towards this diagram, it is observed that the object is not a symmetric either on horizontal line or vertical line. So the object is not symmetric. Means here we have required to find out x bar and y bar. Okay. Both things we are required to find out here. Now, second thing we are required to do, or second step, convert all the composite lamina into a standard lamina whose formulae we know. जिसके हमको फॉर्मूले पता है उस टाइप के लैमिना में उसका कन्वर्जन करना पड़ेगा. जिसको अभी तक समझा नहीं है, ये प्रॉब्लम समझा नहीं है, उसको भी मैं बता रहा हूँ साइड बाय साइड. Remember that already we are having some basic formulas of rectangle, triangle, circle, half circle, quadrant of circle. इसके हमको formulas पता है, तो उसी में हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. कंपोजिट लैमिना जो है, कंपोजिट लैमिना का स्टैंडर्ड लैमिना में कन्वर्ट करेंगे. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज
composite lamina, composite we will convert into a standard lamina. Composite lamina we have converted into a standard lamina. Now, how many standard laminas we can produce here? 3. 3, correct. 3. And all 3 are a rectangle. 3, sir. Correct, correct. So I will consider this is a first. I will consider this is a second. And I will consider this is a third. Am I right? So first rectangle will be in this much. Second rectangle will be this much. And third rectangle will be this much. Are you understood? Now, now locate the centroid of this standard lamina. आपको पॉइंट मेंशन करो खाली. आपको क्या लगता है कि इस लैमिना का सेकंड ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड किधर होगा? वो अंदाज से आप उधर पॉइंट करो. अंदाज से हमको पता होना चाहिए कि इनके सेंट्रॉइड किधर है, तो वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड इधर होगा, इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड इधर होगा और इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड इधर होगा. ऐसे हमने जस्ट डॉट वी हैव केप्ट ऑन द डायग्राम. इसका फायदा क्या हो जाता है कि हम गलतियां करने से, इस गलतियां हम अवॉइड कर सकते हैं इससे. सो लोकेट द पॉइंट्स and you can mention here in the bracket x1 y1. Here you can mention x2 y2 and here you mention x3 and y3. Just you can mention here. Now draw a separate lamina with respect to point A. अब A को कंसिडर करके हमको 3 लैमिना ड्रॉ करने पड़ेंगे. स्टैंडर्ड जो लैमिनास है वो सेपरेट डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे. सेपरेट डायग्राम ऑफ लैमिना, सेपरेट डायग्राम of lamina. So with respect to A we have required to find out. So first I will draw the base. First rectangle I will draw here. A point is here. Write down the dimension also here. It is a 160, it is a 25. Am I right? So this is the first part. Now similarly draw a second part. आप आपके नोटबुक में किधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है. So this is the second part with respect to A. Dimension is, you know that it is a 20 and this is a 200. 20 and 200 height. मेरे यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैंने क्या क्या कर रहा हूँ, इधर उधर ड्रॉ कर रहा हूँ. और आई विल इरेज द अबव पोर्शन, स्टेप्स आई विल इरेज हियर एंड थर्ड पार्ट आई विल ड्रॉ हियर. थर्ड पार्ट मैं गलत हो शायद होगा तो आप बता दीजिएगा, बिकॉज इट मे पॉसिबल दैट आई एम गोइंग टू मेक अ मिस्टेक. और इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग यू कैन आस्क अ क्वेश्चन टू मी. आपको विथ रिस्पेक्ट टू ए को कंसिडर करके आपको डायग्राम निकालनी है. विथ रिस्पेक्ट टू ए को कंसिडर करके आपको डायग्राम निकालनी है. सपोज दैट यू आर इन होम, आपका घर से डिस्टेंस 0 होगा. आपने क्या किया कि कुछ काम के लिए आप बाहर गए. सपोज दैट आई एम लिविंग इन विलेज एंड आई वेंट टू द पंढरपुर. सो मेरा घर से डिस्टेंस कितना हो गया, समथिंग डिस्टेंस. मीन इन माय केस विलेज टू पंढरपुर डिस्टेंस इज 18 किलोमीटर और 13 किलोमीटर. सो आई विल कंसिडर 13 किलोमीटर विथ रिस्पेक्ट टू खेड बाड़ौनी. एंड इफ सपोज दैट आई वेंट टू अ पुणे, so the distance is a 2
250 or 245 kilometer. But with respect to Khedbaloni, the distances are going to change. But A will not going to change. Are you understood? So here also same thing. First object A को ही connected है. Second object A से थोड़ा दूर है. And third case में ये ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर है. Are you understand? So ये पॉइंट के इसके थर्ड के हम डायमेंशंस भी लिखेंगे. So it is 100 and 25. So mention somewhere here. This is a center जो हमने पहले ही ड्रॉ किए थे. पॉइंट लोकेट करो. Now what is our basic formula to find out x bar? X bar is equal to a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 divided by a1 plus a2 plus a3. Am I right? Similarly, y bar is equal to a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 divided by a1 plus a2 plus a3. Now find out the unknowns in these formulas. How to find out? आपने जहां भी डायग्राम फर्स्ट की ड्रॉ की है उधर आप a1 मेंशन करो, x1 मेंशन करो एंड y1 मेंशन करो. Okay. So I will put this x1 y1 at above side so that you will get idea. x1 and y1. From A, how much is the x1? From A, how much is the y1? So this will be the x1 and this will be the y1. Okay. Now what is the formula of area for rectangle? It is 160 into 25. Find out this. 4,000. Okay, 4,000. x1 कितना आएगा इधर? 80. And y1 is at 12.5. Is it correct? 12.5. So x1 is a b by 2 and d by 2 or h by 2. It depends on you. What we are calling for height. You are calling d or b, h. It depends now. Now similarly, we will turn towards second object now. Second object के यहाँ जाएंगे हम. So you can check it here. It is a2, x2 and y2. a2, x2 and y2. Now who is going to tell a2 here? 4,000. Again it is a 4,000. 1,000. 20 into 200, it is a 4,000. How much will be the x2 in this case? 10. x2 10, correct. Definitely it is a x2 is a 10. And y2 is a this much. Remember this, from the position of A, this much is the y2. 120. 125. Please check again. See here. This distance is 100. Not sorry. This distance is a 25 and 200 divided by 2. 100. 125. 125. It is correct. Now this distance, this object and this A distance, you can check it here. This is a 25 plus d by 2. 25 plus d by 2. So it is 125. So I will write here 25 plus 200 by 2. So answer is going to come 125. Now similarly find out y2. Sorry. I made it. x2 is simple. Sorry, this is a y2. And x2 is how much? x2 is 10. Correct. x2 is a 10. Now similarly, I will give some hot time for the third object. Now try to find out the answers. Which are the answers we have required to find out? Or I will put here, this is x3. So we have required to find out x3.
and we have also required to find out y3. Am I right? So in our case, we have required to find out a3, x3, and y3. Find out now this. A350. A3 how much? 50. 2,500. हाँ, 2,500. 2,500. 2,500. 4,500. Correct. Correct. Now, how much will be the x3 in this case? 50. 50. Correct. X3 is, you can check it, 100 divided by 2, it is a 50. And how much will be the y3? Y3, 250. if I wanted to calculate, check it here. Now, this to this distance is a 225. Check it. 200 plus 25. 237.5. 225 plus d by 2. This is a d by 2. 137.5. So 225 plus 25 divided by 2. So 237, na? 237.5. Now, try to find out now x bar and y bar. The formula by which we are finding out, that formula already I have written on the board. Okay. Now already I have written the formula on the board. So find out the x bar and y bar in this case. सौरभ गुळमकर. Yes, sir. हा, समजतंय का रे? हा. बरं, याचा आन्सर तेवढं मला सांग, एक्स बार आणि वाय बार सांग तेवढं. Keep the values of a1, x1, a2, x2, a3, x3. It is already on the board. बोर्ड पे लिखी हुई वैल्यू है, आपको जस्ट कैलकुलेशन करना है, पुटअप करके उसका वैल्यूज फाइंड आउट करना है. 46.19. करेक्ट. 46.19. 19. करेक्ट. एक्स बार इज अ 46.19. आणि 108.9 सर वाय बार. Correct. Y bar is 108.9. So I will write somewhere here. X bar is equal to 46, na? 46.19. And 108. Okay, 46.19 it is there. I will put 19 and 108.9. Everyone should require to get this value. सभी को यही वैल्यू मिलनी चाहिए, because these are the correct answers. I have cross-checked this answer. Those are going to get a different answer. Please let me know now so that I will make some corrections. Or if here you have made a mistake, I will tell. Sir, Huh?
I get an 44.28. No, 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 no. It should not be, because you can again cross check your answer. It should be 46.19. Okay, sir. Cross check again your answer. So the two answers are x bar is equal to 46.19 and y bar is equal to 108.9. Now, what we can predict from this answer? That is the very important question for us. हमें इससे क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम चेक कर लीजिएगा. So I will locate this distance now. 46.19. So it will come somewhere here. All right. So just and 108. It will come somewhere here. Now you are going to feel that the centroid. How come centroid is going to come outside of the object? Am I right? ये ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड इधर है, जो ऑब्जेक्ट के बाहर है. Am I right or wrong? Here 46, we will consider 46 here. This is a 20, so obviously it will be a 26 if I will consider. So this distance is a 46 and this distance, vertical distance, is a 108. Now you tell me that if the centroid comes outside of object, what is the meaning of this? इसका मीनिंग यही होता है कि ये ऑब्जेक्ट, इस पे लोड अप्लाई किया, इस ऑब्जेक्ट पे लोड अप्लाई किया तो ये सभी तरफ से डिफ्लेक्ट होने के चांसेस है, सभी तरफ से बेंडिंग होने के चांसेस है. इसलिए तो पटरी जो रहती है वो पटरी कभी भी इस टाइप के स्ट्रक्चर से नहीं बनाई जाती. जो रेल की पटरी है, रेल की पटरी का स्ट्रक्चर आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा. बिकॉज द रीजन इज दैट इन आई सेक्शन ऑलरेडी वी हैव सीन दैट द सेंट्रॉइड कम्स इन द ऑब्जेक्ट. सेंट्रॉइड कम्स इन द ऑब्जेक्ट. यू कैन चेक इट नाउ. यस्टरडे वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम. सेंट्रॉइड किधर आता है देख लीजिए, आई सेक्शन का उस ऑब्जेक्ट में आता है. तो ऑब्जेक्ट में आने के बाद ऑब्जेक्ट की सस्टेनेबिलिटी ज्यादा रहेगी. बेंडिंग तो होगा ही, लेकिन सस्टेनेबिलिटी भी उधर रहेगी. सो दैट अ सेंट्रॉइड इज ऑलवेज लोकेटेड इन द ऑब्जेक्ट. सच टाइप्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी आर कंसिडरिंग वेयर लोड इज मैक्सिमम. जिधर भी ज्यादा लोड रहता है, ज्यादा लोड होने के चांसेस होते हैं, उधर इस टाइप के आई टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स का डिजाइन किया जाता है. क्लियर द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज दैट इफ द ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड बाहर आ गया होगा तो इसका मीनिंग क्या है? सो द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट. डिफ्लेक्ट इन द सेंस इट विल बी बेंड एनी वे, एनी हाउ. उसमें से कोई भी पॉइंट स्टेशनरी नहीं रहेगा. सभी पॉइंट जो है उस ऑब्जेक्ट के डिफॉर्म ही होंगे, डिफ्लेक्ट ही होंगे या डिफॉर्म होंगे. क्लियर? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? Any question? No. Okay. Now we'll go to the next question now. So I will give another object to you.
Now this much portion is a empty portion. Remember this. This much portion is a empty portion. So dimensions you can check it. It is a 300. Or I will draw a somewhat bigger one. Okay, now try to solve this problem now. So how much the height? हाँ एक मिनट 300 दिलेले मी एकच मिनिट. Okay, now this is a 400. This much is the 400. Now which height you are expecting? This is a 300. दिसत नसेल तर इथं लिहितो 300. Now height is a 300. First part is 100 mm. Second is a 300. Half circle जो है उसका 300 diameter है. 200 rectangle triangle का base है. 400 above portion. Now here you remember that the circle जो भी circle इधर है वो circle empty portion है. The empty portion. Now follow our regular steps. First check the object is symmetric or not. This object is not symmetric at all. Either on horizontal line or vertical line is symmetric है ही नहीं. तो हमको x बार भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और y बार भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. लेकिन फॉर्मूला में एक स्मॉल चेंज है. Am I right? So how many objects we will construct first we will see and then afterwards I will tell this. So how many objects? Standard lamina? 3. 1. This is a second and this is a third. 3 laminas we can construct. Huh? Lotus lecture. Hello. Now there are 3 objects we can produce here from composite lamina. Now see here, what will be the formula to find out x bar? In this case, remember that if any portion is deducted from the composite lamina, then a1 x1 minus a2 x2 plus a3 x3 divided by a1 minus a2 plus a3. Remember this thing. What is the change here? Previously, when we are writing x bar, then we are using a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3. But here we have not used that. So I can say that to find out x bar, we have required to consider algebraic summation. If any empty portion is there, that we have required to deduct. हमको वो remove करना पड़ेगा. Clear? रोहन चौगुले. हाँ सर बोला. समजलं का तुला मी काय म्हणलो ते? हाँ समजलं. हा, जर एखादा पोर्शन हा जर हॅलो पोर्शन असेल तर तो पोर्शन आपल्याला डिडक्ट करावा लागतो ड्यूरिंग फाइंडिंग एक्स बार. जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट में कंपोजिट लैमिना में हॅलो पोर्शन होगा तो दैट पोर्शन
which is the hollow portion? Second portion is the hollow portion, so that I have required to consider the negative sign here. Now similar thing which we have required to follow here also, y bar is equal to a1 y1 minus a2 y2 plus a3 y3 divided by a1 minus a2 plus a3. Clear? Now try to solve this problem now. Now problem is very simple. Regular procedure, whatever the procedure which we have followed in the previous example, same procedure we have required to follow here also. Sir, from which point we have to find the centroid? Correct. So that I have not mentioned. I will consider the point A here at this corner. Okay. Now try to solve the problem now. I will not explain this problem now to you. Remember this. आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आदत बन जाएगी आपको कि मैं ही प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और आप खाली देखते रहेंगे इस पे. So I will give a time to you. 8 मिनट रह गए हमारे पास. So try to solve this problem. तीनों ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए से ड्रॉ करो पहले. तीनों ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए से ड्रॉ करो. Those are not kept attendance in chat box, please write it down, the attendance in chat box. कल मेरे को टाइम नहीं मिला वो वीडियो अपलोड करने के लिए. टुडे एनी हाउ आई एम गोइंग टू अपलोड ऑल द वीडियोस ऑन द यूट्यूब एंड देन दैट लिंक आई विल सेंड ऑन अ टेलीग्राम. Okay, so all the videos in last week, whatever I have taught you, that all the lectures will be on YouTube, and that link I will send to you up to afternoon, up to 1 PM I will send it to you. I will just give the hint to you. Only 5 minutes left now. I will draw just a diagram. Remaining part you are required to write. You are required to find out the answer of this. And from A point, so check the dimension, how much it is, 400 divided by 300. So this is the first part.
second part with respect to A, we have required to find out. Now, remaining formulas, you know that b by 2 d by 2 in half circle 4r divided by 3 pi, and from corner it is r, and for right angle triangle b by 3 and d by 3. This formulas you might have written in your notebook. So dimensions are clearly visible. First object 300 height, 400 width. So b by 2. So I will say here that x1 will be at 200, y1 will be 150. Second case, check the x1, or just before solving this problem, please mention here dot, so that you will get idea कि हमको किधर से कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. डॉट पुट अप करो. सो डॉट का डिस्टेंस ये से हमको फाइंड आउट करना है. डॉट जो मैंने अभी अभी रिप्रेजेंट किया है ना, वो डॉट का डिस्टेंस ए से फाइंड आउट करना है. सो चेक इट. आई विल राइट आल्सो हियर. इन दिस केस a1 400 into 300, so it is 1200, or again another 0. Sir, x bar minus 97.11. मायनस कसं काय येईल रे? Sir, big. मायनस येण्याचा प्रश्न येत नाही ना इथं. एक्स बार मायनस कसा येऊ शकेल? मायनस येत नाही. एक्स बार हा 254 येतोय आणि वाय बार हा 163 येतो. राइट डाउन द आंसर ऑल्सो. 263 and y bar, 1 minute, 254 सॉरी आणि 163. 163 आणि 254. Okay, now answer also I have written here 255 and 163. हे आन्सर मी उद्याच्याला तुमच्याकडून चेक करणार आहे. Remember this. So here you can check it here. x1 इतला simple आहे. x1 is 200, y1 is equal to 150. In this case a2 is equal to 1/2 pi r square. 1/2 pi r square. x2 will be how much? 100 plus 150, and y2 is equal to 4r divided by 3 pi. How it is, you have required to see the previous example. Similarly, a3 1/2 200 into 300, x3